What is the dissimilarity amongst fate and specification? Fate का मतलब होता है जो फाइनल डिफरेंशिएटेड फेट होता है, मतलब सेल्स एग्जैक्टली क्या बन रही है वो उसका फेट है, क्या बना रही है. और स्पेसिफिकेशन का मतलब होता है इट्स काइंड ऑफ प्रॉमिस कि सेल्स को ये बनाना है इन फ्यूचर. If cells are transplanted from their normal region in an embryo to a different region in a recipient embryo, such cells will alter their fate but not their specification. No, आपने specification को alter कर देंगे तो ये option तो incorrect है. Cell fate describes the allocation of cells to the germ layer, ectoderm, mesoderm and endoderm, whereas specification is the exact tissue that each cell will ultimately become. No, उल्टा लिखा हुआ है. स्पेसिफिकेशन का मतलब होता है कि सेल्स किसी भी लेयर का स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर सकती है, तो ये भी इनकरेक्ट है. द फेट मैप ऑफ एन एम्ब्रियो डज नॉट चेंज ड्यूरिंग डेवलपमेंट. द फेट मैप ऑफ एन egg is the same as the fate of a late blastula, whereas the specification map of an embryo changes continuously as the embryo's development proceed. No, it's also not, ये भी dissimilarity को show नहीं कर रहा है. The fate of a cell is determined by labeling that cell and following it during normal development, yes, and whereas the specification state of a cell is determined by culturing a cell in an artificial medium and observing what tissue form from it. So fourth option is correct according to question.